हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा यूनिट 1 का नाम है डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर। तो ये चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? द इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS, एप्लीकेशन ऑफ DBMS, द एडवांटेज ऑफ DBMS, द 3 लेवल ऑफ डेटाबेस architecture, database abstraction, data independence, a data definition language, and data manipulation language. Okay. The why we study the database. ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि वाई वी स्टडी और वाई वी नीड द डेटाबेसेस. द डेटाबेसेस आर यूजफुल फॉर द anywhere. Many computing applications deal with the large amount of informations. Database system gives a set of tools for the storing, searching and managing these type of informations. तो उसके लिए हमें डेटाबेस चाहिए. A database in computer engineering. The database is a core topic in the computer science. Basic concepts and skill with the database system are part of the skill set you will assume to have as a CS graduate. Now, यहाँ पे हमने definition दी है कि what is database according to the Oxford dictionary, a set of information held in a computer. फ्री ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटिंग उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? वन और मोर लार्ज स्ट्रक्चर सेट्स ऑफ persistent data usually associated with the software to update and query of the data. Dictionary.com, a collection of data arranged for ease and speed of searching and retrieving. And most important for our sites, a database in more general sense is an organized collection of data. More specifically, a database is an electronic system that allows data to be easily accessed, manipulated and updated. Now, what is database system? A database system consists of 4 types. The first one is a data. It means the database. The second one is a software. Third one is a hardware. And the last one and the most important, the users. We focus mainly on the software. A database management system is a collection of programs to enable the users to create and maintain the database. It allows the user to multiple users and programs to access and manipulate the database concurrently. It provides the protection against unauthorized access and manipulations, provides means to evolve the database and program behavior as a requirement change over the time. It means सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें यही डेटा चाहिए, यही डेटा फेच करवाना है, तो वो उस बिहेवियर के मुताबिक हम उसको चेंज करेंगे. नाउ एग्जाम्पल ऑफ द DBMS, the IBM's to database 2, Microsoft Access, SQL Server, Oracle, MySQL, SAP's SQL and any more. What the database does? The DBMS provides the user with the DDL. Again, it means the data definition language. The second one is the data manipulation language. And the third one is a data control language. DBMS provides the persistence, concurrency, integrity, security and data independence. Now the next is the data abstractions. Database systems are made up with the complex data structure. To ease the user interaction with the database, the developers or programmers, they hide the internal irrelevant details from the users or end users. This process of hiding the irrelevant details from the users is called as a data abstractions. For example, suppose हमें कुछ information hide करनी है, जो हमारे जो एंड यूजर्स है, यानी हमारे जो क्लाइंट है या जो भी हमारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो. फॉर एग्जांपल आप फेसबुक का ले लो, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में वही चीज़ आपको डिस्प्ले होती है जो आपके लिए यूज़फुल हो. अदर डिटेल्स जो प्रोग्रामर्स है या डेवलपर्स हैं उन लोगों ने ऑलरेडी हाइड करके रखी होती है. नाउ दिस द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. द फर्स्ट वन इज द फिजिकल लेवल that describes how the record actually stored in the database. The next is the logical level, describes the data stored in the database and the relationship among the data. Like जो हमारे डेटा है, कस्टमर्स है, तो वो जो रिकॉर्ड है उसके अंदर उसका नेम है, तो उसकी डेटा टाइप क्या है, उसका रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन है, वो सारी डिटेल्स. एंड द थर्ड वन इज़ द व्यू लेवल, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हाइड डिटेल्स ऑफ द
data types. We can also hide information out for the security purpose. Now this is the example of the abstract data or view of data. Already हमने ये तीन लेवल्स, तीन ये इमेजेस हमने देखी थी. The first one is a physical level, जो हमारा बेस लेवल होता है. The second one is a logical level and the third one is a view level. We are storing the student information in a student table. तो फर्स्ट फिजिकल लेवल में क्या होगा, जो भी हमारा डेटा है, records can be described as a block of storage in bytes, gigabytes, terabytes, etc. in memory. These details are often hidden from the programmers. ओके, तो यहाँ पे जो जितनी भी डिटेल्स जो हमारी एक्चुअल डेटा स्टोर होगा वो कहाँ पे होगा, हमारे फिजिकल लेवल पे होगा. वो किस फॉर्मेट में होगा, बाइट्स में होगा, गीगाबाइट्स में होगा, टेराबाइट्स में होगा. द नेक्स्ट इज अ logical level. Records can be described as a fields and attributes along with their data types. The relationship among each other can logically implemented. Programmers generally work at these levels. Okay, यहाँ पे जो प्रोग्रामर है उनका वर्क यही लेवल पे है. जो फिजिकल लेवल, तो फिजिकल लेवल में कौन वर्क कर रहा होगा, जो DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो एक्चुअल डेटा हमारा मैनेज करता है, या वो टोटली जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करता है. ओके, उसका ऑथोराइजेशन किसके, फिजिकल लेवल का ऑथोराइजेशन किसके पास होगा, DBA के पास. लॉजिकल लेवल का ऑथोराइजेशन किसके पास होगा, जो हमारे प्रोग्रामर्स है या वेब डेवलपर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, उनके पास. एंड द थर्ड वन इज़ अ व्यू लेवल, यानी हम जो क्लाइंट, जो हमारी एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं, वो यूज़र जस्ट इंटरेक्ट विद द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ GUI. यूजर्स आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ एंड द वॉट द डेटा आर स्टोर्ड. The DBMS process. A database management system is a collection of programs that enables users to create and maintain a database. The DBMS is a general purpose of software system that facilitates the processing of defining, constructing, manipulating, and sharing databases among the various users and applications. So first one is defining. Defining a database involves the specifying the data types, structures, and constant of the data to be stored in the database. The database definition or descriptive information are also stored by the DBMS in the form of the database catalog or dictionary. It is also called the metadata. The second one is the constructing. The DBMS is the constructing the database is the process of storing the data on some storage medium that is controlled by the DBMS. The third process is manipulation. Manipulating a database includes a function such as the querying of the database to retrieve the specific data, updating the database to reflect changes in the mini world, and generating reports from the data. Now the next process is the sharing. A database allows to multiple users and programs to access the database simultaneously. An application program accesses the database by sending queries or requests for the data to the DBMS. Although what is query? A query is typically cause the sum of data to be retrieved. A transaction may cause some data to be read and some data to be written into the database. Okay, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो DBMS है, तो DBMS जो प्रोसेस है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट टेबल्स विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स. तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी डेटा टाइप क्या क्या होगी, वो सारी डिटेल्स हम कहाँ पे रखेंगे, डेफिनेशन सेक्शंस में. उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो एक्चुअल डेटा है वो स्टोर करना है, तो वो स्टोर कैसे करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, वो हमारा सेकेंड प्रोसेस होगी. द थर्ड वन इज़ ए मैनिपुलेशंस. सपोज हमें इंसर्ट, अपडेट या डिलीट की प्रोसीजर करवानी है, या कुछ मैनिपुलेशन करवाने हैं, या दो टेबल्स में से एक नया टेबल करवाना है, तो वो सारी प्रोसीजर्स किस प्रोसेस में आएगी, मैनिपुलेशंस में. एंड द नेक्स्ट वन इज़ शेयरिंग, द मेन मोटो ऑफ द यूज़र्स, कि हाँ उनको जो डेटा चाहिए तो हम कैसे शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द DBMS. So now the new topic is the characteristics of DBMS. First one is the real world entity. DBMS these days is very realistic and real world entities are used to design and architecture. Also behavior and attributes are used by DBMS. Let's take one of the example. Suppose यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले ले, या कॉलेज का एग्जांपल ले ले. तो कॉलेज में जो कॉलेज के स्टाफ है
तो कॉलेज के स्टाफ है वो क्या हो जाएगा, उसकी एंटिटी हो जाएगी, और उसका जो आईडी है स्टाफ आईडी, तो वो क्या हो जाएगी, एट्रीब्यूट हो जाएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि हाँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है और स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट नंबर है वो उसका एट्रीब्यूट है। तो जो भी डेटाबेस है वो बिहेवियर एट्रीब्यूट से ही जाना जाएगा। Okay. Now the next is a self-describing nature. Before DBMS, a traditional file management system was used for the storing information and data. There was no concept for describing or defining the data like in DBMS. A DBMS should be a self-describing nature, as it's not only for the contents of the data, but it provides the database itself and also provides the metadata. Now, metadata क्या है? The metadata that defines and describes not only the extents, type, structure, and the format for all the data, but it also maintains or describes the relationship between the data. This data represents itself that what action should be taken on it. And now the third one is the support ACID properties. Any DBMS is able to support ACID properties. A means accuracy, C means completeness, I means isolation, and the D means durability. It is made sure in every DBMS that the real purpose of the data should not be lost while performing the transactions like insert, update, and delete operations on the database. Let us one of the simple example. Suppose हमारा जो ईमेल आईडी है, ओके, कोई एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में ऑलरेडी हमने वो ईमेल आईडी का डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सपोज हम कोई डेटा फीड से वही सेम टू सेम ईमेल आईडी का एंटर करते हैं तो वहां पे मिसमैच की एरर आएगी। Let's take another example. If the employee name is updated, then it should make sure that there is no duplicate data and no mismatch of the employee informations. Okay. Now the next one is a concurrent use of database. There are many chances that many users will accessing the data at that same time. They may require altering the database system concurrently. At that time, the DBMS support them to concurrently use the database without any affecting or any problems. With the help of concurrency, economy of the database systems can be increased. For example, in railway reservation system, can book and access the tickets for the passengers concurrently. Every employee can see on his own interface that how many seats are available or bogie is fully booked. And let's have another example. Suppose we have they use the book my show applications, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि हाँ एक मैं यूजर हूँ, कोई दूसरा यूजर भी है, but that particular time वहाँ पे हम कोई टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो हाँ जितनी सीट्स बुक हो चुकी है वो हमें दिखाएगा दोनों की साइड। सपोज मैं पहले कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, तो उसके क्या बोलेंगे, concurrency. The next one is insulation between data and program. The program data independence provide a big relief to the database users. In traditional file management system, the structure of file was defined in the application program, so user had to change all the programs that are using the particular data files. It means के पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल इंडिपेंडेंट सिस्टम थी तो उसमें क्या था, सपोज हमें कुछ चेंजेस करना है हमारे डेटाबेस में तो क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में या डेटाबेस में तो पहले से हमारा पूरा प्रोग्राम और डेटाबेस फिर से शुरू करना पड़ेगा। कोई ऐसे चेंजेस और ऐसे कोई नए रूल्स डिफाइन नहीं थे उसमें। But now in the current systems, but in DBMS, the structure of the data file is not stored in the program, but it's stored in system catalog. Okay, यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेशन सेक्शन में होगा, जो प्रोग्राम है वो कंट्रोल सेक्शन में होगा। ओके, तो उससे क्या फायदा होगा कि यहाँ पे सपोज हमें डेफिनेशन सेक्शन में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, उसकी इफेक्ट हमारे जो प्रोग्राम है उसमें नहीं आएगी। विद द हेल्प ऑफ दिस internal improvement of data efficiency,
or any changes in the data do not have any effect on the application software. Now the next one is a transaction. Transaction are a bunch of actions that are done to bring the database from one consistent state to another consistent state. In traditional database file systems did not have these type of features. Transaction is always atomic, that means it can never be further divided. It can only be completed or uncompleted. For example, a person wants to credit money from one account to the another person's account. Then the transaction will be complete if he sends money and other persons receives his money. Anything other than that, this can lead an inconsistent transaction. Now the next one is a persistence. Persistent means if the data is not removed explicitly, then all the data will be maintained in DBMS. If any system failure happens, then lifespan of the data stored in the DBMS will be decided by the users directly or indirectly. Any data stored in the DBMS can never be lost. If the system failure happens in between any transaction, then it will be rolled back or fully completed, but the data will be never be at risk. The next one is a backup and recovery. There are many chances of failure of the whole database. At this time, no one will be able to get the database back, and for sure company will be in a big loss. So this is the one and only solutions to take a backup of the database, and whenever it is needed, and it can be a stored back. A database must have these characteristics to enable more effectiveness. The next is a data integrity. This is one of the most important features of the DBMS. Integrity ensures the quality and reliability of the database system. It protects the unauthorized access of the database and make it more secure. It brings only consistent and accurate data into the database. Okay. And now the next one is a multiple views. This is also one of the best features. User can have multiple views of the database depending on their department and interest. A DBMS supports the multiple views of database to the user. For example, a user of teaching department will have different view, and a user of hostel department will have a different view. This feature helps a user to have somewhat security because the users of other department cannot access that file. The next one is stores any kind of data. A database management system should be able to store any kind of data. It should not be restricted to employee name, salary, address, email ID, etc. Any kind of data that exists in the real world can be stored in the DBMS, because we need to work with this all kind of data that is present around us. The next one is a security. The DBMS provides the security to the data stored in it, because all the users have different rights to access the database. Some of the users can access the whole database like DBA, while others can access a small part of the database like user. For example, a computer network lecturer can only access the files that are related to the computer subjects, but the HOD of the department can access the file of all the subjects that are related to their department. Okay. Now the represents the complex relationship between data. The data stored in the database is connected with each other, and relationship is made in between the data. DBMS should be able to represent the complex relationship between data to make efficient and accurate use of the data. And the last one is a query language. The queries are used to retrieve and manipulate the data, but DBMS is armed by strong query language that make it more effective and efficient. Users have the power of retrieve any kind of data they want from the database by applying the different set of queries. File-based systems has not these type of features of query language.
नाउ आज के क्वेश्चंस दिस सेशन के द फर्स्ट वंस डिफाइन डेटा, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे आपको पहले डेटा क्या है वो लिखना है, डेटाबेस क्या है वो लिखना है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सब इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शंस एंड एक्सप्लेन द व्यू ऑफ डेटा विद एग्जांपल। तो मैंने समझाया था कि हाँ एब्स्ट्रैक्शन क्या है, व्हाई वी नीड, तो वो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके जो व्यू थे तीन, द फर्स्ट वन फिजिकल लेवल था, देन लॉजिकल लेवल था, और व्यू लेवल था। तो वो व्यू लेवल यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द DBMS, जो 14 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करनी है। जो नोट्स है वो नोट्स भी आपको मैं अभी इस सेशन के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद सपोज आपके कुछ कोई भी डाउट है तो इस लेक्चर के बाद आप आफ्टर 2 बजे के बाद हम एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, तो उसमें आपकी जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। सपोज आप वहाँ पे आप नहीं आते हो तो उसके बाद भी आप मुझे मेल या व्हाट्सएप के थ्रू भी आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।